like a Hellcat. वेलकम इन जियोलॉजिकल नॉलेज। सो ऑब्जेक्टिव जियोलॉजी की सीरीज़ में आज हम टेस्ट चेंज करेंगे थोड़ा, एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट सम स्ट्रक्चरल जियोलॉजी एंड वी विल स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, सम बेसिक फंडामेंटल्स. ओके, so let's start the video. So actually this video consists some questions related to the basic structural geology, and first one is so basic: the branch of geology which deals with the morphology, classification and mechanism and causes of development of these rock structures is called as. Means geology की जो branch है which deals with the morphology, classification and mechanism as well as the causes of development of these rock structure is known as rock geology, structural geology, basic geology or lithology. So it's too basic, you can answer it directly, it's structural geology. So basically the purpose was to introduce with the term structural geology and with the definition. So basic definition of structural geology is the branch of geology which deals with the morphology, classification, mechanism and causes of development of these rock structure. So hence the correct answer will be the B. Stratification can seen widely in which type of following rocks. जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो किस टाइप की रॉक्स में वाइडली डिस्टिंग्विश होता है या वाइडली देखा जा सकता है? इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और फॉसिल रॉक्स. So you all know stratification is a very important feature when we study or when we talk about the sedimentary rocks. So most sedimentary rocks are deposited under the conditions which favor development of distinct layers piled up on one above another from bottom to the top. So these layers are called beds or strata. Okay. So if the thickness of layer is less than 1 centimeter, we call them strata, and if it is greater than 1 centimeter, that is known as bed. There is a statement given here: outcrop is seen on land everywhere on the earth. ये स्टेटमेंट दिया गया है कि जो आउटक्रॉप है वो आप लैंड पे कहीं भी देख सकते हैं. सो ट्रू और फॉल्स? सो ऑब्वियसली इट्स डायरेक्टली आपको इसको फॉल्स कर देना है, क्योंकि आउटक्रॉप क्या है, कहीं पे तो वो एक्सपोज्ड है, कहीं पे अनएक्सपोज्ड है. सो वी कैन नॉट सी एवरीवेयर on the earth's surface. So solid rocks are not exposed everywhere on the surface of the earth. These are the mostly covered with a thick or thin layer of loose deposits known as alluvium, or if we talk in simple terms और मोस्ट कॉमन लैंग्वेज सॉयल. भाई जितनी भी आपकी आउटक्रॉप्स हैं सब तो एक्सपोज नहीं हो सकती ना अर्थ सरफेस पे. दे कैन बी covered with the alluvium or the soil, or they may be covered with the vegetation, or they may be covered with the weathered material. Okay, so outcrops cannot be seen everywhere on the earth's surface, hence rock or the outcrop is not seen everywhere on the earth. So option B is correct, means the statement given statement here is false. Most widespread rock on the earth surfaces, जो अर्थ की सरफेस है या अर्थ पे जो सबसे वाइड स्प्रेड रॉक सिस्टम है वो कौन सा है? इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स और all are in equal quantities. So it said that sedimentary rocks are superficially the most widespread rocks, forming more than 75% of exposed surface of the earth. Okay, so जो exposure है earth surface पे वो सबसे ज़्यादा sedimentary rocks का है. So option B is right. Which of the following about lamination is not true? Here 4 statements are given about lamination and you have to choose one which is not true. It's closely related to stratification. It is literally paper thin. It is layered structure developed in extremely fine grained igneous rocks. It is layered structure developed in extremely fine grained
sedimentary rock. So it's very easy, you can guess it, it's option C. So the term lamination is closely related to stratification, and it is layered structure developed in extremely fine grained sedimentary rock, not the igneous rocks, which are made up of the clay and silt. The layers are paper thin, literally speaking. Just for understanding or just to explain you, the layers are very thin. Okay, so option C is correct. The maximum angle of inclination of a layer of a rock with the horizontal is known as. Okay, so this is very important, or very important, and we can call it very basic. So it's the definition of dip. The angle of inclination with the horizontal is known as dip. Okay, so it's expressed both in terms of the degree of inclination and degree of inclination. मीन्स जो डिग्री है, डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन, मतलब उनको डिग्री में भी एक्सप्रेस किया जाता है, एंड डायरेक्शन, इट हैज़ बोथ अमाउंट एंड डायरेक्शन बोथ. ओके, एंगल ऑफ डिप इज मेजर्ड यूजिंग विच इंस्ट्रूमेंट. सो इट्स ऑल्सो बेसिक बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. जो एंगल ऑफ डिप है वो किस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया जाता है? कंपास, थियोडोलाइट एंड टैक्योमीटर और क्लाइनोमीटर. सो आपको पता है ये जो क्लाइनोमीटर कंपास है, तो द डायरेक्शन ऑफ डिप इज डिटरमाइंड विद अ सिंपल कंपास वेयर एज द एंगल ऑफ डिप. भाई जो कंपास, आप जो नॉर्मली कंपास यूज़ करते हैं, दैट इज़ ओनली टू टेक डायरेक्शंस, बट इफ़ यू हैव टू टेक द एंगल ऑफ डिप, you will have to go for the instruments known as clinometer, and which comes built in the compass. जो clinometer आता है, compass उसमें इनबिल्ड होता है. and जो ब्रंटन compass है, that is the extended, or you can say modified version of clinometer. Okay, so here option D is right. Next one is, which among the following is not a type of dip? So given here 4 types of dip, and you have to find out one which is not the type of a dip. Wide spread dip, primary dip, sedimentary dip, local and regional dip. So wide spread dip is not any term. We know about primary dip, secondary dip, local and regional dip, but वाइड स्प्रेड डिप ऐसा कोई टर्म है ही नहीं. द टाइप ऑफ डिप्स आर प्राइमरी, सेकेंडरी, लोकल एंड रीजनल. वाइड स्प्रेड डिप इज नॉट एनी टर्म. द टर्म इंट्रूजन इज बेसिकली एसोसिएटेड विद व्हिच टाइप ऑफ रॉक. जो इंट्रूजन टर्म है वो किस टाइप की रॉक्स के साथ एसोसिएटेड है? इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, नॉट एसोसिएटेड विद एनी टाइप ऑफ रॉक. सो इंट्रूजन टर्म जो है वो igneous rocks से associated है. So igneous rocks which are formed from the cooling and crystallization of hot molten material known as magma or lava. So magma is basically lava. जब जो molten material है, when it's in the interior of the earth, we call it magma. But when it comes on the surface of the earth, it known as lava. Okay, so वही लिखा हुआ है ना कि igneous rocks are formed from cooling and crystallization of hot molten material called magma slash lava, which depends on the place of occurrence. Okay, if it has occurred in the internal of the earth, we call it magma, but if it has deposited or spread on the earth surface, we call it lava. The magma gets intruded or injected into the pre-existing rock of any type called the host rock, and takes various shape forms on cooling. So these forms are commonly termed as intrusion. So the term intrusion is literally related to igneous rocks. 10th दिया हुआ है, the dip which involves tectonic force is. जो कौन सी डिप है वो टेक्टोनिक फोर्सेस को इन्वॉल्व करती है? प्राइमरी डिप, सेकेंडरी डिप, लोकल एंड रीजनल डिप. नो डिप इन्वॉल्व्स टेक्टोनिक फोर्सेस.
सो ऑब्वियसली आपका आंसर यहाँ पे बी होगा. सेकेंडरी डिप इज द इंक्लिनेशन induced in the strata after the deposition due to the tectonic forces, okay, to which such strata have been subsequently subjected. So secondary dip is, and secondary dip may range in values up to vertical. So maximum किसी भी बेड की जो मैक्सिमम डिप है वो 90 डिग्रीज ही हो सकती है ना. अगर वो 90 डिग्री से ज़्यादा है तब तो उसका क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगा. ओके, अगर वो नॉर्थ साउथ क्वाड्रेंट में है एंड इफ इट इज़ 91 डिग्रीज, सो ऑब्वियसली इट विल गो इनटू 90 to 180 quadrant. Okay, so option secondary dip may range in values up to vertical. So जो क्वेश्चन दिया था द डिप which involves tectonic forces, so that is option B, secondary dip. Here a question is given here, okay, and before we solve that question I will refer you to go for KM Bangar book. बेसिकली ये आपका जो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है, स्पेशली थिकनेस ऑफ बेड्स एंड डिप एंड स्ट्राइक ऑफ द बेड. सो यू कैन रेफर द चैप्टर जियोलॉजिकल मैप एंड सेक्शंस, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी आपका बेसिक क्लियर करके दिया गया है. एंड इवन ये जो क्वेश्चन है ये हूबहू या वही नंबरिंग तो नहीं दी है, बट उसका फार्मूला डिराइव किया गया है यहाँ पे. सो आई विल रेफर यू टू गो फॉर दैट बुक. ओके, लेट्स कम टू द क्वेश्चन. A coal seam is exposed on a horizontal ground if it's 30 degrees towards west. Its width on the outcrop on a level ground is 360 meters. What is the true thickness? So आपको जो कोल सीम दी हुई है जो कि एक्सपोज्ड है हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे, तो उसकी जो extends on horizontal, if it is 30 degrees towards west, width of outcrop on a level ground is given here 360 meter. So you have to find out the true thickness. So basically this question will be solved by the formula which is known as true thickness equals width of outcrop into sin 30. and ये जो formula है, this formula is given in this book KM Bangar, as I have referred to you. Go for that book. So we will substitute that value. Sin true thickness equals to width of outcrop into sin 30. Since sin 30 means if it is 30 degree towards west, तो जो आपको अमाउंट जो एंगल दिया हुआ है that angle is given here 30 degrees. So we will put that into the formula. True thickness will be, so width of outcrop is 360 into sin 30, that will be 1 by 2. So we will calculate it, that will give the answer 180 meter. Okay, another question is given here, and the same question you have to refer this book KM Bangar. Okay, बेसिकली जो आपका बेसिक्स है न्यूमेरिकल पोर्शन का, दैट इज गिवन हियर. यहाँ पे आपको जो आप जियोलॉजिकल मैप का क्रॉस सेक्शन बनाते थे स्ट्रक्चरल मैप्स का, उसका भी कॉन्सेप्ट आपको समझाया गया है यहाँ पे. सो आई विल रेफर यू दिस बुक. ओके, let's take this question. At a dam site, a bed of sandstone is exposed on horizontal ground. If it's 25 degrees towards east, its width of outcrop on a level ground is 240 meter. What is the vertical thickness? In the previous question we have discussed about the true thickness, and here you have to calculate the vertical thickness. So vertical thickness का भी formula है, vertical thickness equals to width of outcrop into tan and angle of inclination which is given here 25 degrees. We will put the value vertical thickness equals to 240 cross tan 25 degrees. We will calculate it out. So that will give answer the 111.91 meter, means option C. Next one is the study of outcrop dimensions doesn't involve which of the following aspects. Means when we study the outcrop dimensions, which of the following doesn't involve? Okay, width, thickness and depth, dip and strike, rock composition. It's too basic. आपको भी पता है कि जो rock composition है and the type of the rock, it has nothing to do with the outcrop dimension. And width, thickness and depth,
dip and strike, they have to do all the things. The study of rock composition and type of a rock is not under the outcrop dimensions, whereas the rest of the thoroughly studied under the topic. 14th one, foliation is the primary structure of which type of rock? सो बेसिकली जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये हैं तो बहुत बेसिक से, बट जब तक आपको बेसिक नहीं क्लियर होगा या जब तक आप बेसिक्स मजबूत नहीं करेंगे या स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, तब तक आप जो लेवल वाले क्वेश्चन हैं या जो थोड़ा टफ क्वेश्चन है उनको कैसे करेंगे. ओके, सो हम केवल ये बेसिक्स आपको डिस्कस कर रहे हैं ना, जस्ट फॉर अ रिवीजन पर्पज़. हम जो टफ क्वेश्चन हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, उनकी थ्योरी को भी समझेंगे, बट जस्ट फॉर द इंट्रोडक्टरी क्लासेस आई एम dealing with such type of questions. So foliation is the primary structure of which type of rock? You all know foliation is a primary structure of metamorphic rocks. Okay, so stratification and lamination are the most common primary structures of sedimentary rocks. Okay, crystalline structure is typical of igneous rocks, but foliation is a typical primary rock in case of metamorphic rock. So option C is right. 15th and last one, the dip of a layer measured in the direction that is at the right angles to strike is. So basically ये definition दी हुई है आपको true dip की. Okay, true dip की definition क्या है? When the dip of a layer is measured in the direction that is essentially at right angles to the strike of the particular layer, then it's known as true dip. Okay. But when the dip of a layer is measured at any other direction than the true dip direction, this is known as, or that is known as apparent dip direction. Okay. सो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए आज. सो जैसे मैंने पहले ही बात करी कि बेसिक क्वेश्चन तो आपको पता होने ही चाहिए. हो सकता है इसमें से आपको एक भी क्वेश्चन ना मिले, ऐसा है नहीं, क्योंकि हमने जो कोलसीम या जो न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए हैं या 2-3 क्वेश्चन और जो डिस्कस किए हैं वो थोड़ा लेवल के क्वेश्चन थे, बट बाकी जो क्वेश्चंस थे वो बिल्कुल बेसिक था आपका, वेरी बेसिक. बट बेसिक्स भी कभी कभी अगर आप रिवाइज करके नहीं गए हैं या पढ़ के नहीं गए हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो इनफ टू कन्फ्यूज़ यू. आपको कन्फ्यूज करने के लिए इनफ है. ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के लिए साथ. ओके, थैंक यू.